Good morning students. How are you all? Today we are going to solve worksheet number 7. Choose the correct answer for each of the following question. Aisha's Ammi prepared dash for dinner. Roti and spicy potatoes, parathas with potatoes, puri and spicy potatoes. तो आयशा की अम्मी ने क्या बनाया था? पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो. When the puri was put in hot oil, it puffed up and dash, sank, float or dissolved. So it started floating. When the chapati was put in water, it dashed. So it's puffed up, floated, sank and stayed there. तो रोटी चपाती जब पानी में उसने डाली तो क्या हो गई? चपाती नीचे पानी में सैंक होके उधर ही बैठ गई. Fill in the blanks with correct answer. The soap case continued to dash when the soap was in it. तो जो soap case था वो float करने लगा because soap case was made up of plastic, so it started floating. और जो soap था वो पानी में नीचे बैठ गया. A wooden boat will float in water but a needle will sink. Empty bowl will dash on water. Empty bowl will float on water. Next, true or false? A lighter wooden boat and heavier ship will float on water. True. A matchstick will sink in water. False. An iron nail will sink in water. True. Answer in one word or sentence. What will happen to an ice cube as soon as you drop it in glass of water? जब हम आइस को वाटर के ग्लास में ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है? The ice will float on water. वो पानी में तैरने लगता है. What will happen to a soap cake when dipped in a water tub? The soap cake will sink in water. What will happen to an aluminium foil when it is dipped in water? The aluminium foil will float on water. Fill in the missing letters. Floating, floating. Droped, drop. Experiment, experiment. Answer the following questions in details. What will happen to empty plastic bottles, half filled plastic bottles without a cap and fully filled plastic bottles closed with a cap when you put them in water? So plastic bottle will float, half filled plastic bottle without cap will sink and fully filled plastic bottle with closed cap will float. जो प्लास्टिक बॉटल है वो फ्लोट करेगी. हाफ फिल्ड प्लास्टिक बॉटल जिसका कैप हमने खोल दिया है वो अंदर सिंक हो जाएगा और जो फुल प्लास्टिक बॉटल फिल्ड है और उसकी कैप भी क्लोज्ड है तो वो पानी में फ्लोट करेगी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल ओशंस एंड सीज हैव डैश वाटर. स्वीट, salty or sour. They are having salty water. When wet clothes are in the sun, they dash, become more wet, dry, remain wet. So they become dry. Milk dash water. Milk dissolves in water. Fill in the blanks with correct answer. The Dead Sea is the saltiest sea. कौन सा सी सॉल्टीएस्ट है? रेड सी. दांडी मार्च टुक प्लेस इन द ईयर डैश 1930. राइट ट्रू और फॉल्स. अ पर्सन हु डज नॉट नो स्विमिंग विल नॉट ड्रॉन इन द डेड सी. इट इज फॉल्स. डेड सी में कोई भी तैर सकता है. अ लेमन विल सिंक इन द सी. फॉल्स. The British had put a heavy tax on salt. True. Answer in word or sentence. What will happen when you add salt in water? The salt will get dissolved in water. What will happen when you add sugar in water? The sugar will dissolve in water. What will happen to oil
when what will happen when oil is added in water? The oil will not dissolve in water. Fill in the missing letters. MEDICINES, medicines. STRAINING, straining. REMAINS, remains. Explain the procedure of making salt. The sea water is collected in shallow The water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. Right, children? Explain the procedure of making salt. The sea water is collected in shallow bed, right? और जब जो सी वाटर है सबसे पहले उसे शैलो बेड में कलेक्ट किया जाता है, राइट? वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन सन. उसके बाद पानी को ड्राई करने के लिए रखते हैं. द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड. सबसे पहले जो सैंड है उसके अंदर शैलो बेड्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर पानी को भर दिया जाता है. तो वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन. उसके बाद पानी को ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है. आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड. सो विद दिस चिल्ड्रन वी कंप्लीट अवर वर्कशीट. आफ्टर सीइंग द वीडियो चिल्ड्रन you will write the question and answers you will write without seeing. Thank you and have a nice day children.